Hello everyone. So today we will study chapter number 2, Introduction to Linear Polynomials, grade 9 mathematics. So let's start with example to understand concept. So here is the example of Raju who went to a shop where there were seal boxes of different colors on sale. Okay, so you can see one of the box of blue color and another box of red color. The shop owner told him that red box equals to 4 pence. So red box contains 4 pence and blue box contains 5 pencils. Okay. Now Raju buys X red boxes and Y blue boxes. Here we do not know how many red boxes and blue boxes Raju is going to buy. It is mentioned here X red boxes and Y blue boxes. Okay, it means X and Y can have any value. It means they are variables. How can he quickly figure out the total quantity of pens and pencils? अभी आपको X रेड बॉक्सेस पता है, Y ब्लू बॉक्सेस पता है. अब वो जल्दी से कैसे पता करेगा कि कितने टोटल पेन और पेंसिल हैं? अब इसमें एक चीज़ और नोटिस करिए, इफ़ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री, ठीक है, उसने X रेड बॉक्सेस बाय किए एंड Y ब्लू बॉक्सेस, अब उसे 3 एक्स्ट्रा पेन्स भी मिल रहे हैं. सो टोटली हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल्स डिड ही गेट ऑल टुगेदर? हाउ विल यू कैलकुलेट क्विकली? सो ऑब्जर्व हियर एक्स रेड बॉक्सेस. देखो रेड बॉक्स में, एक रेड बॉक्स में कितने पेन है? 4 पेन है. अब नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें पता नहीं एक्स है, तो इट मीन्स 4 इंटू एक्स यदि आप करते हो, यदि आपको एक्स मालूम पड़ जाएगा तो 4x पेन्स हो जाएंगे. इट मीन्स एक्स रेड बॉक्सेस इक्वल्स टू 4x पेन्स. सिमिलरली वाई ब्लू बॉक्सेस equals to 5y pencils. Why 5y? Because one blue box contains 5 pencils. So y blue boxes will contain 5y pencils. Okay. अब उसके पास 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री भी हैं. ठीक है. कैन वी राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन? ये देखिए, द टोटल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स इक्वल्स टू 4x plus 5y plus 3. Okay. X is variable, Y is variable. 4 means 4 pens in one red box. So X total number of red box. 5 pencils in one blue box. Y total number of blue box. And 3 extra pens. So in this form, you can represent this situation. And now to calculate quickly how many pens and pencils he bought, we have this expression. Okay, now let's explore this expression. Okay, so you can see 4x, 5y and 3. All these three things are known as terms. Individually 4x is a single term, 5y is another term, one more term, 3. Note down, terms are separated by addition or subtraction. Terms are separated by addition or subtraction. अच्छा, अब इसमें देखिए 4x, एक एक सिंगल टर्म को देखते हैं. 4x, यहाँ पे 4 क्या है? इट इज कोफिशिएंट है ऑफ x. तो x is variable and 4 is coefficient of x. Similarly 5 is coefficient of y and 3 it is a constant. Constant means what? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. ठीक है, जो कि कांस्टेंट है, 3 ही रहेगा. इट कैन नॉट बी 4, इट कैन नॉट बी 5, इट विल बी 3 ओनली. सो इट इज अ कांस्टेंट. एंड व्हाट अबाउट एक्स एंड वाई? दीज आर वेरिएबल्स. सो एक्सप्रेशन जो बनता है किससे मिलके बनता है? टर्म्स से मिलके बनता है. टर्म्स किससे मिलके बनती है? कोफिशिएंट एंड वेरिएबल्स से. नाउ लेट्स सी algebraic expressions. Some examples of algebraic expressions. So x square plus 1, it is an algebraic expression. 4x is also an algebraic expression. 2y minus 1 is also an algebraic expression. So algebraic expressions involving one variable. You can see in these 3 examples of algebraic expressions. Let's see first one. Here is only one variable x. Yes, power of x is 2. बट वेरिएबल यहाँ पर सिर्फ x है, y नहीं है इसके साथ, ना ही z है.
यहाँ देखिए यहाँ पर भी सिंगल वेरिएबल एक्स दिख रहा है, इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है वाई, तो इसको हम क्या कहते हैं, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलता है जिसमें केवल सिंगल वेरिएबल होता है तो उसे आप क्या कहेंगे, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स और यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल्स। क्लियर? Now the next topic is degree of polynomial. So let's take an expression 5y cube plus y square plus 2y minus 1. Here second one x square plus 5x plus 1, 3z plus 7 and 8. Now see 8, it is a constant. Is it an algebraic expression? Is it an polynomial? Yes, it is also a polynomial. You can write 8 as 8 into x raised to the power 0. What is the meaning of x raised to the power 0? जब भी किसी वेरिएबल का पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और 8 को वी कैन राइट 8 into 1, 8 into 1 will be 8 only. 8 into 1, 1 मतलब x raised to the power 0. Clear? So we can write 8 as 8 into x raised to the power 0. Now see degree of polynomials. So here the highest power of variable, see the highest power of variable, यहाँ y दिख रहा है वेरिएबल इस एक्सप्रेशन में, y का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो इसका डिग्री कितना होगा, 3। अच्छा, जो पावर 3 है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? नाउ सी द सेकेंड वन, हियर द मैक्सिमम पावर इज 2। किसका मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का पावर देखना है, विच इज 2। जब 2 पावर है मैक्सिमम तो इसका डिग्री 2 होगा और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Now here in the third one, the maximum power of variable is, highest power of variable is 1. So it is the polynomial of degree 1 and this is called linear polynomial. तो जब 1 power होगा, degree 1 होगा तो linear polynomial, degree 2 then quadratic, if degree is 3 then cubic. Now here the power of variable is 0. ठीक है, तो 0 डिग्री है, इसका डिग्री कितना होगा, 8 जो है पॉलिनोमियल, इसका कितना डिग्री है, 0 डिग्री, और ये होगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दिस फोर आर पॉलिनोमियल्स, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल्स है। अब इनमें आपने क्या देखा, हाईएस्ट पावर देखा वेरिएबल का, है ना। फर्स्ट पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन था, y था, यहाँ कौन है, x, यहाँ z, यहाँ कोई पॉलिनोमियल में वेरिएबल नहीं दिख रहा है, बट हमें ये पता है कि यदि कोई वेरिएबल का पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 ही होती है। तो यू कैन राइट 8 इंटू एक्स रेस टू द पावर 0, 8 इंटू वाई रेस टू द पावर 0, 8 इंटू जेड रेस टू द पावर 0। ओके, so 8 is a constant polynomial. So polynomial is highest power of variable in polynomial is called its degree. Now let's solve exercise number 2.1. Okay, so question number 1, find the degrees of the following polynomials. अब बताइए, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। यहाँ वेरिएबल x है, x का पावर क्या है आपका, हाईएस्ट पावर 2 है, इट मीन्स द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 2। okay, the highest power of variable is x is 2, it is a polynomial of degree 2. see this one, here the highest power is 3, so इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। थर्ड वन -9, अब देखिए यहाँ पर -9 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ आपको वेरिएबल नहीं दिख रहा, तो वेरिएबल नहीं दिख रहा इट मीन्स वेरिएबल का पावर कितना है, 0 है। ठीक है, तो डिग्री कितनी आएगी इसकी, 0। हियर डिग्री 1। क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। देखिए ये 3x प्लस 2 कुछ भी ले सकते हो आप, 3 यू कैन राइट 3y प्लस 2, यू कैन राइट 5z प्लस 7, यू कैन राइट 7x माइनस 3। ओके, बट कंडीशन क्या है, डिग्री 1 बोला है मतलब वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, नाउ डिग्री 2 के लिए y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1, डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर इज 2। डिग्री 3, 5z क्यूब प्लस z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, डिग्री 3, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर क्या है, z का यहाँ पर 3 है, फिर उससे कम 2, then 1, then 0. So question number 2 done. Now see question number 3. What are the coefficients of x square and x cube in the polynomial?
यहाँ देखिए ये पॉलिनोमियल इट इज गिवन टू यू, आपको बताना है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है 6, सो 6 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स क्यूब के मल्टीप्लाई में -3 है, यदि आप 3 लिखते हो तो इट इज रॉन्ग, you will have to mention sign also. So -3 is the coefficient of x cube. Now question number 4, what is the coefficient of z in the polynomial? हम यहाँ पर z का polynomial में coefficient बताना है. So you can see z cube is present, z square is present, -11 constant is present, but the term which contains z it is not present in this polynomial. तो जब वो टर्म भी नहीं है तो उसका मल्टीप्लाई क्या होगा 0, तो उसका कोफिशिएंट भी क्या होगा 0. तो द कोफिशिएंट ऑफ z इन द गिवन पॉलिनोमियल इज 0. ठीक है. नाउ व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल? कांस्टेंट टर्म वही होगी जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होगा, तो इट इज -10. क्लियर. सो exercise set number 2.1 complete. If you like this video, if you want to continue, if you want to see more videos like this, just like, share and subscribe. Thank you.